is what they consume. It's about them. Please do not make it about you. ये छोटे छोटे लेसन्स हैं, ये हमें एक्सपीरियंसेस से आते हैं. सम फ्रॉम आवर्स, सम फ्रॉम अदर्स, राइट? And I think the more we dig deeper into our own selves, the more we realize that life is truly beautiful, and even though it's hard, only when you go through it, you grow through it. And once you grow through it, you actually glow through it. अच्छा, जब मैं बात करती हूँ माइंड मसल की, आई थिंक हम अपनी रेगुलर थॉट्स की कार्डियो को अगर पॉज कर दें और माइंडसेट स्ट्रेंथनिंग के टूवर्ड्स वर्क करें, देन अ लॉट ऑफ चेंज कैन हैपन, अ लॉट ऑफ चेंज, राइट? एंड चैरिटी बिगिंस एट होम. सो अगर हम अपने अंदर झाँक के देखें, आई थिंक द नंबर वन स्टेप आई वुड लाइक यू ऑल to work on, like from today, is, at least you guys can try, right, is to reflect inside and start to be self-aware. हमारे subconscious mind को I think सब पता है what we are doing, what we are consuming, but we just like to suppress it under the noise. I think हम उससे भागते हैं, like we know what we are doing. For instance, if my goal is to, for example, gain muscle in my body, and obviously I know that I have to eat, right? But still I'm having tiring days, and then I just make that excuse to not eat well, and I'm like, it's okay, हो जाएगा, फिर से थोड़े दिनों बाद कर लूँगी. I am well aware that this is not the right thing. I mean, if I have to work towards my goal, it's going to take a lot of efforts. It's going to take a lot of mental strength. और वही हमें develop करनी है. I think if not consistent, then at least persistence. That's very much important. कि अगर आप एक दिन नहीं भी कर पाते, then you bounce back and you start working towards your goal rather than just giving them up, right? यहाँ मैं ऑल्सो ऐड करना चाहती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल डाइट. सो आई थिंक मेंटल डाइट इज समथिंग दैट वट एवर वी कंज्यूम थ्रू आउट द डे, it just starts from, it's just very basic. So you wake up in the morning, you start scrolling whatever you scroll, your browser histories, and आप किससे बात करते हो, आपकी सराउंडिंग्स, आपके घर पे कैसा माहौल है, हाउ आर यू रिएक्टिंग, हाउ आर यू ट्रीटिंग अदर्स, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग. आई थिंक all these things set a pattern, and that's what our diet is all about. हमें अपनी डाइट को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा. एंड आई थिंक दैट बिगिन्स विद अनदर टिप दैट आई एम गोना पुट थ्रू ऑन द टेबल, दैट इज़ controlling the things which you actually are in control of, and giving up totally and absolutely on the things which are actually not in your control. I mean, just imagine, आप कैसे किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो जिसकी चाबी आपके हाथ में ही नहीं है, right? You can only drive the car of your life and control how you want to ride it, right? तो आई थिंक इसका मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, बहुत ही कॉमन है, एंड आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट. जब भी हमें कोई कुछ बुरा बोल देता है, कोई करीबी रिश्तेदार, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स, पार्टनर, एनीवन हु हर्ट्स अस, हु सेज बैड, हमारा ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जस्ट टू थिंक द एक्सट्रीम, सबसे नेगेटिव सोचना सिचुएशन के बारे में कि यार इसने ऐसे बोल कैसे दिया, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तो इतनी हैरानी हो रही है कि इसने मेरे बारे में ऐसे बोल कैसे दिया, उसको शर्म नहीं आती क्या कर रहा है या क्या कर रही है. Like we just love to draw conclusion. It's like, आपको एग्ज़ाम में एक ऐसे लिखना है, आप इंट्रो लिख रहे हो, and then you're just writing the conclusion. Where's the analysis? So I think one thing that we can do in certain situations, like जब आपको कोई बुरा बोलता है, आपकी पीठ पीछे, आपके फेस पे रूड है, I won't say कि इफ़ेक्ट नहीं होता, because I've heard things. Being a Punjabi, I hear this so common. छड़ पर यार गोली मार, कुछ नहीं होता.
Like क्यों? How can I just chhad pare? I mean, it's not possible. So I think the first thing that I do and that actually helps me is I just accept the fact that it's okay. I know my truth. I know that the facts they said are not true, and it really hurts that it came out of someone who's really close to me, or I expected them not to say that. But the second step, अगर मैं पहले जैसी होती तो मे बी आई कुड बी जस्ट हैंगिंग इन देयर, विक्टिमाइज करती अपने आप को कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, आई हैव ऑल द राइट्स टू क्राई एंड टू ईट वट एवर आई वॉन्ट टू, आई जस्ट वांट टू मेक माई सेल्फ फील गुड, ओ माई गॉड मेरी लाइफ अब ऐसी है, उसने मुझे ऐसे बोल दिया. नो, I think how I see it now as a mature person, or at least trying to grow every single day, I feel like, we are students of life. Like we can never graduate. We are learning every single day. So on basis of that, how I would tackle this situation is, it's okay. It's okay. I understand that person's opinion. That doesn't make a difference. It's not bringing food to my table. It's not paying off the rent or mortgage. It's not raising my kids. It's not pleasing my my everyday life. So it's okay. They have all the rights to. I cannot control how they feel. I can only control how I can respond to that. And that respond is just finding a place where you can learn to, or I would say agree to disagree, and that's perfectly healthy. हमें फियर छोड़ना पड़ेगा किसी को प्लीज़ करने का या फिर बार बार सॉरी बोलने का जब हम गलत है ही नहीं है, बिकॉज वी आर बाउंडेड टू डू दैट, राइट. हमें यही सिखाया जाता है कि इट्स ओके, झुक जाओ, है ना. It's fine, झुको when you think that it's worth it. But where you think that it's gonna be a repetition, I think the best thing is not to cut off, not to respond back rudely, because why would you spoil your karma? I think the best thing is to set healthy boundaries, create healthy boundaries, and that can be very heavenly. सो इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे विद सम ब्यूटिफुल टिप्स कमिंग अप इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट. सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ब्यूटिफुल वीक. So please guys, keep supporting, keep sharing, keep subscribing, keep following, and that's the least we can do to help each other, to support each other, to make the world a better place.